yes sir करेंगे ना बेटा, तो छोड़ दे, तुम बीच में पूछो ना सर व्हाट अबाउट हैरी पॉटर भी पूछा करना है, किताब से निकलो सब आराम से। ये तो मेरे को प्रेशर दे रहा है अभी अर्नब, मुझे टेंशन दे देता है। आओ जिंदा एस बेटा, डोंट वरी, वो खत्म नहीं कर पाएंगे आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational numbers on number line. Bittu, after doing this we will be left with multiplication division. Again we have to verify properties called commutative, associative and distributive, and then we will finally have some problems like what number to be multiplied, what number to be divided. Then we will finally do some word problems. A man has got so many meters of cloth, ऐसा टाइप क्वेश्चन भी आएगा। इससे पहले आइए ये आपने मजा नहीं यार, टेंशन मत ले, सब होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर आपको प्लॉट करने देगा which is known as the rational number, that rational number can be a what? Proper fraction, or it can be a improper fraction. My English is very bad, you know. Right? Proper fraction में आगे जाके वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Children, always in your life develop the habit of mind map. आपकी मम्मी आपको बोलती है ना जाओ रत्नदीप, तो तुम वैसे निकालो टू गो टू रत्नदीप। लिफ्ट मिल भी सकता है, देर भी हो सकता है, मिल गया तो अंदर मुझे गर्लफ्रेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अंदर भीड़ भी हो सकता है। ऐसे करके तुम प्लान करोगे ना तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। बैकअप इज देयर फॉर एवरीथिंग। कमांडोज गो इन दिस वे बिकॉज यू आर गोइंग इन एनिमी टेरिटरी, ठीक है। ये समझ में आया? तो हर एक एग्जांपल देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है। सो पहले हम कौन सा लेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्लॉट करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव टाइप ए, टाइप बी। On type A we will show what is A1 and A2. On type B we will show you what is B1 and B2. Is that understood? This mind map, have you understood? तो कौन सा खाएंगे आप? हमारे पास है पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, पनीर आलू पनीर, गोभी पनीर। कौन सा खाएं? गोभी पनीर से शुरू करते हैं। बटर चिकन मसाला है नहीं बेटा, है लेकिन सड़े हुए चिकन का है, खाना चाहेंगे आप? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम करेंगे रैशनल नंबर which will be a proper frac। एकदम MS DOS के लैंग्वेज में लिख रहे हैं कंप्यूटर। प्रॉपर फ्रैक, प्रॉपर फ्रैक में कैसा रहेगा? पॉजिटिव। रेडी? यानी कि ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये नंबर है 3 डिवाइडेड बाई 4, ये है आपका नंबर। इसको हम, डिड यू अंडरस्टैंड रोहन? A rational number which should be a proper fraction. You know what is a proper fraction? Which should be positive, and this is the number. So we are going to now plot this number on our number line. अच्छा, anybody has any understanding issue? ये कोई इसमें ये clear है ना? We are now trying to do this one. After that we'll do this one, then this one, then this one. Clear? ये ऐसे बैठ जाता है ना, मुंह में कोई एक्सप्रेशन नहीं, मैं बीच-बीच में सोचता हूँ मतलब क्या सब ठीक ठाक? तो ब्लड इज मूविंग इन योर बॉडी। हाँ ठीक ठाक तो भाई साहब? हाँ ऐसे। Are you happy? Are you sad? Yes. No. Are you a mannequin? If I pinch you, oh, you're alive. Good. Right. चले आगे। 3/4। अच्छा पहले साथ बोलिए, since this is a proper fraction, don't you think that this number is always less than 1? Yes. And it is positive. That means your number 3/4 lies between 1 and another number which is known as motichur ka laddu. Do you agree or not? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, it's a positive number which is less than 1. Positive number less than 1 should lie between what? 0 and 1. तो बना ले अपना लाइन।
ये है आपकी किस्मत की रेखा। व्हाट रेखा? किस्मत की रेखा, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। ये आपका नंबर लाइन हो गया, राइट। यहां सबसे पहले आता है सबसे प्यारा सा मिरर, जिसका नाम है 0। और क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में है, तो हम यहाँ पे मान लो 1 दिखा देंगे, यहाँ पे -1 दिखा देंगे। हाँ, बोलते जाइए बच्चा। इतना तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, नेगेटिव इज ऑलवेज रेड। हाँ, तो उसका क्या क्या, क्या मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, नेगेटिव इज ऑलवेज बैड पीपल। सर्किट वर्किट ठीक है। तो यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस, राइट? व्हाई डिड आई पुट इट टिल 1? Because the number is less than 1 and the number is positive, means my number is dancing somewhere here and I have to plot it. अरे लिखो ना, क्या जाता है रे भाई, क्या जाता है? तुम्हारे घर में 4 आदमी इनवाइट किया, एक 5वां प्लेट रखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मत खाना उसने बेटा, रख दो ना डाइनिंग टेबल में, क्लैरिटी दिखता है ना। इट्स अ नंबर लाइन which you should show that it is going on negative side also and positive side also. What is the harm? And here is my number. Now how to plot the number? In order to plot the number, this is your beautiful Nayan Chakshu, which is known as your eye. Your eye should be first on what? The denominator. What is the denominator? Listen to the story. What is the denominator? 4. Divide 0 and 1 in 4 equal parts. जितना डिनोमिनेटर है उतना पार्ट डिवाइड कीजिएगा। कितना पार्ट डिवाइड करेंगे? 4 parts. अच्छा, now there's a very good question. If you want to make 4 slices of cake, you slice it only 3 times. हाँ, 4 बार काटोगे तो 5 पीस निकल जाएगा। I hope you know this basic logic. ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में करेंगे। तो कैसे 4 पार्ट्स में करेंगे? एक हमारे पास मिडिल में एक ले लें, ठीक है, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। Is it in 4 parts now? 4 equal parts, right? Then your Nayan Chakshu should be on the top one. टॉप कितना है भाई साहब? 3. 4 part, 3 parts out of 4. If 0 to 1 was a dairy milk silk and it has got 4 equal parts, you're consuming how many parts? 3 parts. Okati, Randu, and more. So this is 3 by 4, and you can mention this as your number P, and you can write P equal to 3 by 4. I'll repeat it once again. Once you get a number, you will first have a look whether the number is a proper or improper. We are starting with proper fraction, proper positive. So this is proper fraction. It is understood that the number will be less than 1, right? If the number is less than 1, any proper fraction will be less than 1. If it was 233 divided by 433, then also it is less than 1. But in that case, you have to make 433 parts. So nobody will give you that question. Okay. So it is less than 1. So I know, make my number line. I put a 0. I put 1 on this side. I put a -1 just to show that this is the number line, right? Then I open my Nayan Chakshu, which is always closed. Nayan means eyes. And I look at the denominator. What is the denominator? 4. And I break my dairy milk into 4 equal pieces. My child, don't miss the adjective, you know. Visheshan संज्ञा की विशेषता बताता है, right? Adjective is Visheshan, right? An adjective specifies a noun. What boy? Cunning boy. ठीक है? So 4 equal parts. नहीं तो भी याद रहेगा ना. 4 equal parts. And then put your eye on the numerator. What's the numerator? 3. So how many you're going to eat? 3 for now and 1 for the who lives down the lane. ठीक है ना? अरे चुप कर यार, खा ले, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, हो गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब हम दूसरा नंबर देखेंगे। Our next study is, this was our A1 category. We'll see A2. A2s are what number? Rational number, proper fraction. तुम लोग ना कोर्स खत्म होगा ही नहीं, तुम लोग ऐसा खाली बात करते रहते हो। उसमें क्या देखना है? नेगेटिव देखना है इस बारे में, ठीक है, नेगेटिव। आइए, इस बार हमारा नंबर है -2/3. Ask yourself, is 2/3 a proper fraction? Yes. And you're supposed to plot -2/3. Children, when we plot -2/3, the first thing after looking negative, we understand the plotting will be on this side.
negative 2 by 3 and 2 by 3 both are dealt in the same manner, right? Is this number is also less than 1 now, but in this case, since it is negative, our number will be dancing from 0 to 1. Then open your Nayan Chakshu and see the denominator. How much is the denominator? 3. So this time I'll divide this into 3 equal parts, right? And then have your Nayan on the top. Top is how much? 2. 2. Already I'm on the negative side. 2. Now 2 I will on 0. I'm moving to on this side. I'll move to this side. Okay, random. So this is my negative 2 upon 3, right? And I write this as, say, P dash, and I write P dash equal to. Have you understood? Proper fraction aane se your good luck is very good. It's very easy. But the number will be always between 0 and 1. Improper aane se pehle mixed banana padega. Mixed means, you know, mixed fraction. And then we will do. Chale, time nahi hai. Shall we go for mixed fraction, improper fraction? So children, on my chart, this is done. This is done. I've shown you both. Now you can practice, right? Now we will take this one. We'll take this. Okay, ready? Goalie ready? Striker ready? Huh? Any query? Yeah. So we will take rational number, improper frac, and then improper frac के बाद क्या होगा? Positive. And our number this time is 5 by 3. 5 by 3 is an improper fraction. Step number 1. Step number 1 is convert mixed means mixed fraction. चलिए इसको mixed fraction बनाइए. 5 by 3 can be written as 3, 3 1s are 3, 2. Have you understood? इसका मतलब है बच्चा एक डेयरी मिल्क खाएगा, उसके बाद दूसरे डेयरी मिल्क का 2/3 भी खाएगा. Is this getting clear now? One dairy milk, so this number will be between 1 and 2. Sir, how did you understand it will be between 2? Because after 1, it could not complete the next dairy milk. It only ate 2/3 of it. So shall we draw Kismat ki rekha? So this is your Kismat ki rekha, right? Then you should have a 0. I'm now putting the 0 a bit skewed on the left. Okay. थोड़ा सा skew कर दिया 0. Skewed मतलब थोड़ा सा इस side ज़्यादा किया. So this is 0, and this is say 1. This is 2, and this is favorite of Nivedita, -1. I just like it. 0, -1, 1, and 2. Now this number from this dhacha that you have created, you can say 5 by 3 is a number which is greater than 1 and less than 2. Understood? So plotting will be where? Here, between 1 and 2. So open your Nayan Chakshu, okay, and concentrate only on this part now and follow the same procedure. Look at the denominator is how much? 3. So we will divide this zone into 3 equal parts, and then it should be on the top, right? Top is how much? 2. So this is my 5 divided by 5 by 3. I'll put a P out here and I write P is equal to. And you see, child ate 1 dairy milk and 2/3, 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 means 1. Child ate 1 dairy milk and 2/3. Clear? Any doubt? बोस्ट है तुमको. अगर कोई तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हें इतना मजाक करके पढ़ाने वाला मिल जाए ना, उस दिन एक कैंची लेके आना, ऐसे दे दे, कबाब बना लेना इसका. कोई नहीं पढ़ाएगा. हमें तो छड़ी से पीटा जाता था. उस दिन मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए. हो गया ये. अब दूसरा वाला करें. ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा? रैशनल नंबर, then improper, then frac.
then it has to be a negative. तो नंबर कैसे लें? नंबर लेते हैं 3/2 नेगेटिव, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? -3/2. I know it is a negative number, it is negative, but we will treat it as 3/2. इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लो, कितना हो जाएगा? 2, 1, 1, है ना? So it is a -1 and 1. So it's -1 and half. माइनस का कभी मिक्स फ्रैक्शन बनाते नहीं है, but you know it is -1 and another half on this side. So now we have to make our number line. This is my number line. So this number, first we'll say this number lies between what? We have a -3/2. This number will lie between, will be 1 तो क्रॉस कर गया, -1 और 2. -1 और 2 में छोटा कौन है? -2. So this number is greater than -2, however less than -1. हाँ, so we make our किस्मत की रेखा, and this time we will keep the zero skewed on this side. So we have a 1 which is negative and a 2 which is negative, and for our best friend Nivedita we'll keep a +1 also. She loves. ठीक है ना? अब हमारा नंबर कहां पे डांस करेगा बच्चा? यहां पे डांस कर रहा है. So open your नयन चक्षु, okay, and look at the denominator. Denominator is how much? 2. So you just divide into 2 parts. एक बार काटेंगे, हो गया 2 equal parts, and then put your नयन चक्षु on the top part, one of that. So just come here. So here I will write -3/2, and I'll mark this as, say, P dash. P dash equal to negative. P dash means P is a number, P dash is another number. तुम्हें पसंद नहीं है? तुम क्यों ले लो बेटा? बेटा take Q, huh? You don't like P dash? I never knew that, you know. I'll give you Q. I give you Q. You like it? Very good. So Q. Q is our number which is -3. Now just see, -3/2 means what? एक नेगेटिव चॉकलेट खाएगा और दूसरे का हाफ खाएगा, दूसरे चॉकलेट का हाफ खाएगा, बिल्कुल हाफ खाया. Correct? Rangarang कार्यक्रम for today ends. Today you might get an assignment only on some number plotting. नहीं, सबमिट करना नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, सबमिशन नहीं है. आपको दिया जाएगा to your conscience. If you feel you do, if you don't want to do. हाँ, बिल्कुल, मुझे क्या जाता है, मुझे तो